and we are about to check in. Wow. Wow. So this is the view from the top of our hotel. That's the swimming pool, which unfortunately I can't use because no time. And there's the play area for the kids. This is Vista Residence in Genting. That's the Genting most famous Sui temple, the Chinese temple, and then of course the whole sky worlds. अब हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अब नीचे से। हम ग्रैब के थ्रू टैक्सी बुक करेंगे, ऊबर हो जाए या मतलब जो भी टैक्सी यहाँ पे जो है उसे ग्रैब करके, एप्लीकेशन उसको ग्रैब कहते हैं, तो ग्रैब से हम बुक करेंगे टैक्सी और हम यहाँ से जाएंगे कुआलालंपुर। और हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है मिस्टर बीन।
Hello. So we have reached our next destination, which is this Platinum Suites in the middle of KLCC, and that's the Twin Towers there. So yeah, अभी आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं. पहले मैं फ़िलहाल बाहर निकला हूँ कुछ खाना ढूंढने के लिए. Let's see. ओके सो हमारे होटल से 500 मीटर की दूरी पर है क्विल सिटी मॉल. सो आई एम हियर टू ग्रैब सम पिज़्ज़ा. ओके सो क्विल सिटी मॉल के अंदर आते ही मैं पहले लॉबी में नीचे मतलब एंट्रेंस वहाँ से मिली. फर्स्ट एंट्रेंस वहाँ से नज़दीक था मुझे. तो एंटर होते ही मुझे सबसे पहले दिखी है ग्रोसरी शॉप. तो आई जस्ट थॉट लेट्स डू सम ग्रोसरी शॉपिंग फर्स्ट एंड उसके बाद फिर पिज़्ज़ा. यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा ग्रोसरी स्टोर बना हुआ है. मुझे लगा था शायद क्विल सिटी मॉल कोई नॉर्मल सा मॉल होगा जहाँ पे लोकल शॉपिंग वगैरह करते होंगे. बट यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी दिख रहे हैं क्योंकि आई गेस होटल्स के पास ही है शायद इसीलिए. एंड या प्रीटी मच एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर. This is the view from the top of our hotel. This is our hotel, and that's the KL Tower. And just right behind it, we can see second biggest tower in the world. But we are going towards the Twin Towers. Now we go have some fun.